हेलो पिलामाने मु तुमको स्वागत करुच्चे फिजिक्स विथ अजित को। लास्ट क्लास रे आमे जेई मेन फिजिक्स प्रॉब्लम बस्टर क्लास 11th रे 15 गोटे प्रॉब्लम करथिले हमरो फिजिक्स एंड मेजरमेंट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट बाय यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर रो आज आमे करबा 16 नंबर 16 रो प्रॉब्लम। तो देखिबा पले क्वेश्चन कोन अछि। The time period of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root over L by g. The measured value of the length of the pendulum is 10 centimeter known to a 1 millimeter accuracy. The time for 200 oscillations of the pendulum is found to be 100 seconds using a clock of 1 second resolution. The percentage accuracy in the determination of g using this pendulum is x. The value of x to the nearest integer is what? The question is the value of x to the nearest integer is option A 3%, option B 4%, option C 5%, option D 2%. A question टा होची पिले 18th March 1st shift 2021 रो 2021 रो देखिबा सॉल्यूशन। Given time period of a simple pendulum t is equal to 2 pi root over L by g, t square equal to 4 pi square L by g, or इठु हम परिबे g equal to 4 pi square L by t square. Now to get the percentage accuracy relative error use करके हम कौन कर परिबे पहलेटा delta g by g is equal to delta L by L plus 2 delta t by t इठु हम पुट कर डेल्टा जी बाय जी इक्वल टू आमर कौन है डेल्टा एल आमर दे दीजिए पिले 1 मिलीमीटर बोधे ऊपर देखी 10 टू द माइनस 3 बाय एल आमर 10 सेंटीमीटर देथिला तो ताको आमे मीटर रे कन्वर्ट करके 10 into 10 टू द माइनस 2 कर देले प्लस 2 into 1 डेल्टा टी 1 सेकंड रेजोल्यूशन ऊपर देथिला क्वेश्चन रे बाय 100 टी इक्वल टू 100 तो पिले आमर आंसर आसीबो कोन डेल्टा जी बाय जी इक्वल टू 0.01 plus 0.02 that is equal to 0.03. In percentage delta g by g into 100 percentage error केमती बाहर करिए पहले delta g by g into 100 so 0.03 into 100 is 3%. So पहले आमरो को ऑप्शन टा करेक्ट आसिला आंसर है 3%. So option A is the correct answer. Option A is the correct answer. एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सिमिलर होची क्वेश्चन. The period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2 pi root over L by g. Measured value of L is 1.0 meter from meter scale having a minimum division of 1 millimeter and a time of one complete oscillation is 1.95 second. Measured from stopwatch of 0.01 second resolution. The percentage error in the determination of G will be. Similar question as simply. Option A 1.03%, option B 1.30%, option C 1.13% and option D 1.33%. Question के बारे पिले ना 24th February second shift 2021 रो क्वेश्चन एटा पिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिबा. Time period of oscillation of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root over L by g. Again t square equal to 4 pi square L by g सेठु हम आनिबा g equal to 4 pi square L by t square. Again आमे combination of error use करके आमे कोन करबा delta g by g सॉरी पिले लास्ट प्रॉब्लम रे मो रिलेटिव एरर कर देथिली सेटा होछ हमर combination of error use करके आमे लिखि परबा कोन एठु delta g by g equal to delta L by L plus 2 delta t by t. Given delta L by L is equal to 1 into 10 to the minus 3 by 1. Delta L by L equal to कौन पिले ना 1 millimeter by L आमर देइछि 1 centimeter sorry 1 meter देइछि 1.0 meter L delta L आमर 1 millimeter error देइछि so 1 into 10 to the minus 3 by 1 delta T equal to similarly delta T by T equal to हबो पिले 0.01 by 1.95 0.01 by 1.95 delta T by T that is equal to 1 by 195. So delta G by G is equal to कौन हबो delta L by L 10 to the power minus 3 गला एटा plus 2 delta t by t 2 into 1 by 195 that is equal to 11.25 into 10 to the power minus 3. Then पिले हमें percentage error बाहर कर दबा into 100 कर दबा delta g
by g into 100% is equal to 11.25 into 10 to the power minus 3 into 100%, that is 1.125%. आपको हमें राउंड ऑफ कर ले आसिला हम आंसर 1.13%. So option number C is the correct answer. Option number C is the correct answer. Next question देखिए पहले 18. A physical quantity Z depends on four observables A, B, C, D, as Z is equal to A square, B to the power 2 by 3, then by root over C, D cube. The percentages of error in the measurement of A, B, C, and D are 2%, 1.5%, 4%, and 2.5% respectively. The percentage of error in Z is Z ର percentage error କେତେ ପଚାରିଲା total ଆମର ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ଦେଇଛି option A 12.25%, option B 16.5%, option C 13.5%, and option D 14.5%. Question କେବର ପିଲେ ନା 5th September first shift 2020 September 5 ଆମର 2020 ର question first shift ର solution. Here Z is equal to A square B to the power 2 by 3 by root over C D cube. Combination of error use करके हमें लिखिबा delta Z by Z equal to 2 into delta A by A plus 2 by 3 into delta B by B plus half into delta C by C plus 3 into delta D by D. Percentage error by delta Z by Z into 100% is equal to 2 delta A by A plus 2 by 3 delta B by B plus half into delta C by C plus 3 into delta D by D into 100%. So therefore the percentage error in Z equal to यार calculation बाहर कर देबा delta A by A equal to हमर केते देछि A ପାଇଁ error ଆମର ଦେଇଛି 2%, B ପାଇଁ ଦେଇଛି 1.5%, ଆଉ C ପାଇଁ 4%, D ପାଇଁ 2.5%. तो respective value ଏଠି ଆମେ put କରିଦେବା 2 into 2 plus 2 by 3 into 1.5 plus 1 by 2 into 4 3 into 2.5%. our answer ଆସିଯିବ ପିଲେ 14.5%. That means option D is the correct answer. ଦେଖିବା next question number 19. A student measuring the diameter of a pencil of a circular cross section with the help of a vernier scale records the following four readings: 5.50 mm, 5.55 mm, 5.54 mm, 5.65 mm. The average of these four readings is 5.5375 mm and the standard deviation of the data is 0.07395 mm. The average diameter of the pencil should therefore be recorded as कौन देला पिले हमर ऑप्शन ए 5.5375 plus or minus 0.0739 millimeter, 5.5375 plus 0.0740 millimeter, option C 5.538 plus or minus 0.074 millimeter, and option 4 5.54 plus or minus 0.07 millimeter. Question which is 6 September 2nd shift 2020. Solution देखिबा here हमर कोन पिले ना एवरेज वैल्यू देइछि कोन डायमीटर रो ना 5.5375 millimeter, that is equal to 5.54 millimeter. आम आपको राउंड ऑफ कर डेल्टा डी इक्वल टू आम गिवन अच्छे पे कौन स्टैंडर्ड डेविएशन देछि जोटा कि आम डायमीटर रो 0.07395 millimeter, सिमिलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.07 millimeter. आपको हम लिखि परबा 0.07 millimeter. So obviously the answer is D plus or minus delta D होबो. So 5.54 plus or minus 0.07 millimeter. Option D is the correct answer. Option D was the correct answer. Then we will go to the question number 20. A simple pendulum is being used to determine the value of a gravitational acceleration g at a certain place. The length of the pendulum is 25.0 centimeter and a stopwatch with 1 second resolution measures the time taken for 40 oscillations to be 50 seconds. The accuracy in g is A option देला 2.40%, B 5.40%, C 4.40%, and D 3.40%. So 8th January 2nd shift 2020 question एटा बोले solution L हमर कोन गिवन अछि प्ले L equal to 25 cm 25.0 cm resolution 1 second ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହୁଛି तो पे आम देखिले गिवन अच्छी एल आमर 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्केल आम मेजर कर पेंडुलम ऑसिलेशन को तापर आमर रेजोल्यूशन 1 सेकेंड टाइम देछि आमर 50 सेकेंड
आम जानते प्रीवियस प्रोब्लेम गुड़ा टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी से आम आनी जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर एटा केमती डिराइव होइए तुम मैंने जानिछ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यूज कले पिला हमर एटा हो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू सॉरी डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी एक्यूरेसी इन जी पचार तो यहाँ ही आने आम कि परसेंटेज आने सो डेल्टा एल ये कौन हम पे आमको तो डेल्टा एल क्वेश्चन देनी तो ये आम गोटे कौन आम जाना ना आम मेजरमेंटा है सेंटीमीटर स्केल तो आम सेंटीमीटर स्केल लिस्ट काउंट पॉसिबल एरर केते नबा तो आम एरर टाक लिस्ट काउंट ही नबा तो आमर सेंटीमीटर स्केल आम लिस्ट काउंट हो 0.1 सेंटीमीटर तेणु आम या 0.1 बोली नबा by 2 or 25 L plus 2 into delta t आमर 1 सेकंड रेजोल्यूशन देथिला 1 by t 50 इंटू आपको आम डेल्टा जी बाय जी इंटू 100% करवा एक्यूरेसी पे सो ये आमर हो इंटू 100 जदि आम करवा ये हो आमर 0.4 प्लस 4% 4.4% देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो आशा करूँ तुम मैंने बुझी पार्थिबो पुणी देखा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्लास।